Assalamu alaikum. I'm Dr. Mah-e-Noor, and today the topic of our lecture is protein synthesis inhibitors, part 2, which include macrolides and aminoglycosides. At the end of the lecture, you should be able to classify macrolides and aminoglycosides, give their mechanism of actions, their spectrum, pharmacokinetics, their uses, adverse effects and contraindications, their drug interactions, as well as mechanism of development of resistance. The classification of macrolides include erythromycin, clarithromycin, azithromycin, and an associated group which is known as ketolides and includes clarithromycin. Macrolides are the compounds characterized by a macrocyclic lactone ring, which is a large cyclic lactone ring structure with 14 to 16 atoms, to which deoxysugars are attached. Macrolides are bacteriostatic, and erythromycin is derived from Streptomyces erythraeus, whereas clarithromycin and azithromycin are semisynthetic derivatives of erythromycin. Macrolides bind to 50S ribosomal subunit of RNA. This binding will block the amino-acyl translocation reactions, thus decreasing the formation of initiation complexes, as shown in the diagram. Now, this decrease or block in the formation of initiation complexes will lead to inhibition of protein synthesis. The antimicrobial activity or spectrum of erythromycin is given in this slide. As you can see that erythromycin can treat infections caused by gram-positive organisms such as pneumococci, streptococci, staphylococci, corynebacteria, mycoplasma, legionella, chlamydia, H. pylori, listeria, and certain mycobacteria. Gram-negative organisms can also be targeted by erythromycin, which include Neisseria, Bordetella pertussis, Bartonella, rickettsii, and Campylobacter species. Haemophilus influenza is less susceptible to erythromycin. There are some important pharmacokinetic aspects related to macrolides that we are going to discuss in this slide. As you can see that erythromycin base is destroyed by stomach acid and must be administered with enteric coating. This means that erythromycin अगर हम ओरल रूट के थ्रू जब देते हैं तो वो स्टमक एसिड की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाता है और जो हमें इफ़ेक्ट चाहिए वो नहीं मिलता. इसलिए हम हमेशा एरिथ्रोमाइसिन को एडमिनिस्टर करते हैं विद इंटेरिक कोटिंग जो प्रोटेक्ट करता है एरिथ्रोमाइसिन को ताकि वो स्टमक एसिड से डिस्ट्रॉय ना हो. Food also interferes with absorption of erythromycin. The serum half-life is approximately 1.5 hours normally and 5 hours in patients with anuria. Normal human beings में इसकी half-life 1.5 hours है, जबकि वो patients जिनके अंदर renal insufficiency हो due to any cause, maybe they are the patients of renal failure, जिस भी वजह से renal derangement है उनमें half life increase हो सकती है. However, adjustment for renal failure is not necessary. Large amounts of an administered dose are excreted in the bile and lost in feces, and only 5% is excreted in the urine. Erythromycin is not removed by dialysis. इस बात का मतलब ये है कि जो मेन रूट ऑफ एक्सक्रीशन है एरिथ्रोमाइसिन की वो है बिलियरी एक्सक्रीशन. बहुत थोड़ी अमाउंट है जो थ्रू किडनीज एक्सक्रीट होती है. इसलिए अगर किडनी फेलियर का पेशेंट है तो उसमें हमें इसकी डोज एडजस्ट नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द ड्रग इज एक्सक्रीटेड थ्रू बिलियरी रूट एंड इज लॉस्ट इन फीसिस. इसी वजह से डायलिसिस के थ्रू एरिथ्रोमाइसिन रिमूव नहीं होती. एरिथ्रोमाइसिन
is absorbed and distributed widely, except for the brain and CSF, that is cerebrospinal fluid. मैक्रोलाइड्स सच एज एरिथ्रोमाइसिन बहुत वाइडली डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है, एब्जॉर्ब भी बहुत आराम से हो जाती है, लेकिन ब्रेन और cerebrospinal fluid में नहीं. Erythromycin is taken up by polymorphonuclear leukocytes and macrophages. एक अहम चीज़ ये भी है कि it can cross placenta and it can affect fetus. इसलिए प्रेग्नेंट ख़वातीन में हमें इसको अवॉइड करना चाहिए. Clinical uses of erythromycin include the treatment of coronobacterial infections such as diphtheria and sepsis. Erythromycin is also used in the treatment of respiratory, neonatal, ocular, and genital chlamydial infections. Community-acquired pneumonia caused by pneumococci, mycoplasma, and legionella can also be treated with erythromycin. Also, it is useful as a penicillin substitute in penicillin allergic individuals with infections caused by streptococci and pneumococci. मतलब वो पेशेंट्स जिनको पेनिसिलिन से एलर्जी है उसमें हम एज अ सब्स्टिट्यूट एरिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं. Another important thing that oral erythromycin 1 gram base is sometimes combined with oral neomycin or kanamycin for pre-operative preparation of the colon. Now, कोलन या GIT की सर्जरी से पहले अगर हमने उसको स्टेरिलाइज करना हो तो हम एरिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं ओरली, ओरल नियोमाइसिन के साथ. नियोमाइसिन is an aminoglycoside that we are going to study in the coming slides. अमाइनोग्लाइकोसाइड्स जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि अमाइनोग्लाइकोसाइड्स ओरली एब्जॉर्ब नहीं होते. नियोमाइसिन हम देते हैं सिर्फ टॉपिकल या लोकल इफ़ेक्ट लेने के लिए. क्योंकि वो एब्जॉर्ब नहीं होती इसलिए वो GIT को सिर्फ टॉपिकली एक्ट करके स्टेरिलाइज कर देती है, और यही काम हम ओरल एरिथ्रोमाइसिन के साथ भी कर सकते हैं इन दोनों को मिला के. Due to emergence of resistance against group A streptococci and pneumococci, macrolides are less effective as first-line agents for treatment of pharyngitis, skin, and soft tissue infections, as well as pneumonia. Adverse reactions of macrolides include gastrointestinal effects such as anorexia, nausea, vomiting, and diarrhea, and they occur occasionally after oral administration. एरिथ्रोमाइसिन और क्लेरिथ्रोमाइसिन ये दोनों ये सिम्टम्स लाते हैं इस वजह से क्योंकि ये दोनों ड्रग्स GIT में मौजूद मोटिलिन रिसेप्टर्स को डायरेक्टली स्टिमुलेट करती हैं. इन रिसेप्टर्स के स्टिमुलेट होने से GIT की एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से भूख नहीं लगती, मतली होती है, उल्टी आती है या फिर डायरिया लग जाता है. Now, liver toxicity such as acute cholestatic hepatitis. Erythromycins, particularly the acetylate, can produce acute cholestatic hepatitis, which is characterized by fever, jaundice, and impaired hepatic functions. Erythromycin can cause this kind of hepatitis, especially in pregnant ladies, probably as a hypersensitivity reaction. प्रेग्नेंट ख़वातीन के अलावा भी ये हो सकता है, लेकिन मेनली ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की वजह से होता है. मोस्ट पेशेंट्स रिकवर फ्रॉम दिस, बट हेपेटाइटिस रिकर्स इफ द ड्रग इज़ रीएडमिनिस्ट्रेड. अगर हम एरिथ्रोमाइसिन दे रहे थे और एक पेशेंट को हेपेटाइटिस डेवलप हुआ, हम एरिथ्रोमाइसिन बंद कर देंगे तो वो हेपेटाइटिस ठीक हो जाएगा, लेकिन जैसे ही हम एरिथ्रोमाइसिन दोबारा से देना शुरू करेंगे पेशेंट को ये सिम्टम्स दोबारा से आ जाएंगे.
Other allergic reactions include fever, eosinophilia, and rashes. Erythromycin has been reported to cause cardiac arrhythmias, including QT prolongation, especially in patients with underlying cardiac disease. वो मरीज़ जिनको पहले से दिल का कोई मसला है उसके अंदर एरिथ्रोमाइसिन एरिथमियाज कर सकती है, जिसका मतलब है कि दिल की धड़कन का ख़राब होना. Another important adverse effect is transient auditory impairment. Now, this adverse effect is followed by IV administration. जैसे ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के बाद GIT के इफ़ेक्ट्स आए थे, उसी तरह IV एडमिनिस्ट्रेशन से ऑडिटरी इम्पेयरमेंट वाले एडवर्स इफेक्ट्स आएंगे. नाउ ऑडिटरी इम्पेयरमेंट मीन्स समात का मसला, मतलब सुनाई ना देना. Erythromycin metabolites can inhibit cytochrome P450 enzymes and thus increase the serum concentration of numerous drugs, including theophylline, oral anticoagulants, cyclosporin, and methylprednisolone. Erythromycin also increases the serum concentration of oral digoxin by increasing its bioavailability. So these are some drug interactions that you should know about. Now let's discuss about clarithromycin. Clarithromycin is derived from erythromycin by addition of a methyl group. That means that by adding methyl group in the structure of erythromycin, we derived an entirely other drug which is known as clarithromycin. Clarithromycin has improved acid stability and oral absorption compared with erythromycin. Clarithromycin has almost similar antimicrobial spectrum to that of erythromycin, but it is more active against Mycobacterium avium complex, Mycobacterium leprae, and Toxoplasma gondii. It is also used in the treatment of H. pylori induced ulcers. Helicobacter pylori मैदे में अल्सरेशन कर देता है, जिसकी रेडिकेशन थेरेपी में क्लेरिथ्रोमाइसिन दिया जाता है. तो ये उस रेजिमेंट का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है. Now, azithromycin is a very important drug. You know it as Azomax or Azomax. आजकल जैसे कोविड फैला हुआ है, इन दिनों में बहुत यूज़ होती है. Azomax क्या चीज़ है? Azithromycin is actually a 15-atom lactone macrolide ring compound which is derived from erythromycin by addition of a methylated nitrogen into the lactone ring. So, by adding methylated nitrogen, we can obtain azithromycin from erythromycin. Interactions are uncommon as it does not inhibit cytochrome P450, unlike erythromycin. The spectrum of azithromycin and clinical uses are almost identical to those of clarithromycin, but it is more active against H. influenza, Marxella catarrhalis, and Neisseria. Azithromycin can be given for the treatment of UTI as a single dose and for the treatment of pneumonia as a 4-day course. As we discussed before, that erythromycin is mainly eliminated through biliary excretion, but azithromycin has mainly renal elimination, जिसका मतलब है कि azithromycin, majority of azithromycin is eliminated through kidneys. Now let's discuss about the mechanism of development of resistance against macrolide. The resistance is usually plasmid encoded and there are 3 possible mechanisms involved.
Number one, reduced permeability or increase in efflux. Number two, production of esterases, the enzymes that hydrolyze macrolides. And number three, modification of the ribosomal binding site by chromosomal mutation or by macrolide inducible or constitutive methylase. Another important thing is cross resistance, that is complete between erythromycin and other macrolides. जिसका मतलब है कि अगर किसी पेशेंट को एरिथ्रोमाइसिन से रेजिस्टेंस डेवलप हो गई है तो उसको बाकी मैक्रोलाइड से भी होगी, जिसके अंदर एरिथ्रोमाइसिन भी आता है और क्लेरिथ्रोमाइसिन भी. Ketolide is a semi-synthetic 14-membered ring macrolide with substitution of a 3-keto group for the neutral sugar. Telithromycin, which is an important drug belonging to ketolides, has the same mechanism of action as erythromycin or erythromycin and a similar spectrum of antimicrobial activity. We are discussing ketolides, for example, telithromycin. So the oral bioavailability of telithromycin is 57%. Tissue and intracellular penetration is generally good. Telithromycin is metabolized in the liver and eliminated by a combination of biliary and urinary routes of excretion. हमने पहले पढ़ा एरिथ्रोमाइसिन के बारे में कि वो बिलियरी ट्रैक्ट से ज़्यादा एक्सक्रीट होता है और एजिथ्रोमाइसिन यूरिनरी ट्रैक्ट से, लेकिन टेलिथ्रोमाइसिन इन दोनों से होता है और ये मेटाबोलाइज लिवर में होता है. It is administered as a once daily dose of 800 mg, which results in peak serum concentration of approximately 2 microgram per ml. It is active in vitro against Streptococci pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Staph aureus, H. influenza, Moraxella catarrhalis, Mycoplasma, Chlamydia, H. pylori, Neisseria gonorrhea, and certain non-tuberculous mycobacteria. So you can see that the spectrum is almost similar to that of erythromycin. Many macrolide resistant strains are susceptible to ketolides because the structural modification of these compounds renders them poor substrates for the efflux pump mediated resistance, and they bind to ribosomes of some bacterial species with higher affinity than macrolides. इस बात का मतलब ये है कि वो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जिनके अगेंस्ट मैक्रोलाइड्स काम नहीं कर सक रहे थे क्योंकि उन ऑर्गेनिजम्स ने ईफ्लक्स पंप के थ्रू रेजिस्टेंस डेवलप कर ली थी अगेंस्ट मैक्रोलाइड्स. कीटोलाइड्स उन ऑर्गेनिजम्स को टारगेट कर सकता है क्योंकि कीटोलाइड्स में वो स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस हैं जिसकी वजह से इनके अगेंस्ट ईफ्लक्स पंप मीडिएटेड रेजिस्टेंस काम नहीं करती उन ऑर्गेनिजम्स की. इट is a reversible inhibitor of cytochrome P3A4 enzyme system and may slightly prolong the QT interval. Telithromycin is now only indicated for the treatment of community-acquired bacterial pneumonia because it can cause hepatitis and liver failure. So the only condition that we give telithromycin in is treatment of community-acquired bacterial pneumonia. Aminoglycosides. The classification of aminoglycosides include gentamicin, tobramycin, amikacin, streptomycin, neomycin, kanamycin, natilmycin, and spectinomycin. So you should learn them by heart. You should not confuse these names with any of the other antibiotics. Chemically, aminoglycosides consist of a glycoside and an amino sugar. Gentamicin is produced by Micromonospora purpura, whereas other aminoglycosides are produced by Streptomyces griseus. Aminoglycosides are bactericidal. Another important thing regarding or associated with aminoglycosides is
that penicillins and vancomycin, which are cell wall active drugs, enhance the transport of aminoglycosides. Therefore, they act as synergistic drugs and show synergism. Mechanism of action of aminoglycosides. Aminoglycosides specifically diffuse via porine channels across the outer membrane of gram-negative bacteria to enter the periplasmic space. Then, the drug is actively transported across the inner cytoplasmic membrane into cytoplasm by an oxygen-dependent electron transport process. Therefore, they have no activity against anaerobic bacteria. After entering into the cell wall, the aminoglycosides bind to specific 30S subunit ribosomal proteins and irreversibly inhibit protein synthesis. पहली बात ये कि ये पैसिवली डिफ्यूज़ होते हैं थ्रू पोरिंग चैनल्स जो कि मेम्ब्रेन के अंदर होती हैं और अंदर चली जाती हैं इनटू द पेरीप्लाज्मिक स्पेस ऑफ बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया टू बी एग्जैक्ट. उसके बाद ये साइटोप्लाज्म में जाती हैं बाय ऑक्सीजन डिपेंडेंट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट प्रोसेस. क्योंकि एनारोबिक बैक्टीरिया में वो ऑक्सीजन डिपेंडेंट नहीं होते, ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती उन्हें, इसलिए अमाइनोग्लाइकोसाइड्स की कोई एक्टिविटी नहीं है अगेंस्ट एनारोबिक बैक्टीरिया. ओके, अब जब वो अंदर चले गए हैं साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के, साइटोप्लाज्म के अंदर जाने के बाद अमाइनोग्लाइकोसाइड 30S राइबोसोमल सबयूनिट के साथ बाइंड करेंगी और इरिवर्सिबली इनहिबिट कर देगी प्रोटीन सिंथेसिस को. Aminoglycoside can inhibit protein synthesis by the following mechanism, as you can see in the diagram, that they block the initiation complex of peptide formation and they cause miscoding of amino acids in the emerging peptide genes due to miscoding of code of messenger RNA template. Aminoglycosides act against Enterobacter, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus, Providentia, Serratia, Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus, and Mycobacterium tuberculare. Aminoglycosides can be used in the treatment of certain conditions such as endocarditis, bacteremia, meningitis, neonatal abscess, dental caries, and all these conditions which are caused by certain gram-positive cocci and positive bacilli such as Streptococcus viridans, Streptococcus agalactiae, Enterococcus faecalis, Corynebacterium species, and Listeria monocytogenes. Conditions like UTI, traveler's diarrhea, bacteremia, pneumonia, meningitis, as we have discussed before, other nosocomial infections caused by gram-negative bacilli such as Escherichia coli, Proteus, Pseudomonas, Klebsiella, Serratia, Campylobacter, and Enterobacter can also be treated with aminoglycosides. Now let's discuss the pharmacokinetics of aminoglycosides. Aminoglycosides are polar compounds, so not absorbed orally and must be given intramuscularly or intravenously for systemic effect. ये एक बहुत अहम बात है जो मैंने पहले भी कही कि अमाइनोग्लाइकोसाइड्स थ्रू जीआईटी एब्जॉर्ब नहीं होते, इसलिए इन्हें ओरली नहीं दिया जाता. अगर इनका सिस्टेमिक इफेक्ट चाहिए तो हमें इनको इंट्रामस्कुलरली या इंट्रावीनसली देना होता है. तो यही इनके कॉमन रूट्स हैं. वजह इसकी ये है कि ये पोलर कंपाउंड्स हैं, तो चार्ज कंपाउंड होने की वजह से ये जीआईटी के थ्रू एब्जॉर्ब नहीं होते. यही रीज़न थी कि हम नियोमाइसिन ओरली दे रहे थे ताकि जीआईटी को लोकल इफेक्ट के थ्रू स्टेरिलाइज किया जा सके. They have limited tissue penetration and do not readily cross the blood-brain barrier.
Another important thing, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स और किडनीज का स्टेटस दोनों को हम रखते हैं अपनी नज़र में जब हमने अमाइनोग्लाइकोसाइड देनी है। वो पेशेंट्स जिनमें रीनल इंसफिशेंसी हो ड्यू टू एनी कॉज, अगर वो रीनल फेलियर के पेशेंट्स हैं तो हम उनमें ख़ास तौर पे ख्याल रखेंगे कि इनकी डोज एडजस्ट की जाए। वजह उसकी ये है कि अमाइनोग्लाइकोसाइड्स मेनली थ्रू किडनीज एक्सक्रीट होते हैं। जैसे हमने पहले पढ़ा था मैक्रोलाइड्स में स्ट्रेप्टोमाइसिन थ्रू बिलियरी रूट एक्सक्रीट हो रहा था। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स का मेन रूट ऑफ एक्सक्रीशन इज रीनल। इसलिए अगर किसी की रीनल एक्टिविटी ठीक नहीं है तो उन पेशेंट्स में अमाइनोग्लाइकोसाइड्स एक्यूमुलेट होने लग जाएगा और हमारे पास एडवर्स इफेक्ट्स आएंगे। इस वजह से इनके प्लाज्मा लेवल्स को मॉनिटर करना ज़रूरी होता है। A very important and commonly asked question is, what are the adverse effects or toxicities of aminoglycosides? So there are mainly 4 adverse effects encountered due to aminoglycoside usage, and you should learn them by heart. Number 1 is ototoxicity. Now, ototoxicity means toxicity of auditory system and vestibular system. आम अल्फाज में समात का मसला, जैसे हमने पहले बात की ऑडिटरी इम्पेयरमेंट की मैक्रोलाइड्स में, उसी तरह यहाँ पे भी हम ऑटोटॉक्सिसिटी को डिस्कस कर रहे हैं। अगर अमाइनोग्लाइकोसाइड्स की कंसंट्रेशन बॉडी में ज़्यादा हो जाए और एडवर्स इफेक्ट्स आने लगें तो उनमें बहुत इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट है कि समात का मसला हो जाता है और सुनाई नहीं देता ठीक से। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये इरिवर्सिबल है। अगर एक दफ़ा एक पेशेंट को ऑटोटॉक्सिसिटी डेवलप हो गई है ड्यू टू अमाइनोग्लाइकोसाइड्स तो वो रिकवर नहीं करती आमतौर पे। Auditory damage is more likely with amikacin and kanamycin, whereas vestibular damage is more likely with gentamicin and tobramycin. एक important MCQ या SCQ से related question, आपको पता होना चाहिए कि लूप डायूरेटिक्स जो कि आपने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में पढ़े थे, लूप डायूरेटिक्स भी ऑटोटॉक्सिसिटी करते थे। तो अगर एक पेशेंट जो लूप डायूरेटिक्स ले रहा है उसमें हम ये एंटीबायोटिक्स देंगे अमाइनोग्लाइकोसाइड, तो दोनों मिल के ये टॉक्सिसिटी ज़्यादा कर सकते हैं। तो वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट। नंबर 2 इज़ नेफ्रोटॉक्सिसिटी. Nephrotoxicity means toxicity that involves kidney. Usually, acute tubular necrosis occurs as a result of aminoglycoside usage. Nephrotoxicity is more common in elderly patients and in those receiving amphotericin B, cephalosporins or vancomycin. जिन पेशेंट्स में ये तीनों ड्रग्स दी जा रही हैं, फॉर एग्जांपल एम्फोटेरिसिन बी, सेफ्लोस्पोरिन एंड वेंकोमाइसिन, या फिर पेशेंट्स की एज ज़्यादा है, उनमें हमें ये नेफ्रोटॉक्सिसिटी ज़्यादा देखने को मिलेगी। और जेंटामाइसिन एंड टोब्रामाइसिन आर मोर नेफ्रोटॉक्सिक देन अदर aminoglycosides. Number 3 is neuromuscular blockade. So at high doses of aminoglycosides, a curare-like block may occur. This inhibits the pre-junctional release of acetylcholine and postsynaptic sensitivity to the neurotransmitter and may result in respiratory paralysis. तो आपको ये बात याद रखनी है कि अमाइनोग्लाइकोसाइड्स से भी न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेड इफेक्ट मिलता है, जो अगर हो जाए तो वी कैन ट्रीट इट विद कैल्शियम एंड नियोस्टिग्मीन. The fourth important adverse effect
is skin rashes. Allergic skin reactions and contact dermatitis can also occur due to aminoglycosides. Neomycin is more likely to cause contact dermatitis. Now we should revise the four most important adverse effects of aminoglycosides. You can revise them with me as number 1, ototoxicity, number 2, nephrotoxicity, number 3, neuromuscular blockade, and number 4, skin rashes. Other effects on CNS can also be encountered by the use of aminoglycosides. For example, streptomycin in particular can cause dysfunction of optic nerve. Paresthesia can occur, especially perioral, but other areas of face may also be involved. This occurs after 30 to 60 minutes of administration by injection and remains for several hours. You should know that aminoglycosides are contraindicated in pregnancy. Streptomycin is another aminoglycoside which is used as a second-line agent for the treatment of tuberculosis, plague, tularemia, brucellosis, and with penicillin it is used for enterococcal endocarditis treatment. Gentamicin along with penicillin have a synergistic action, especially against life-threatening infections. Gentamicin acts against Pseudomonas, Proteus, Enterobacter, Klebsiella, Serratia, and Acinetobacter. Gentamicin has been used intrathecally for meningitis caused by gram-negative bacteria, but third-generation cephalosporins are preferred over gentamicin. Topically, gentamicin is used for infected burns, wounds, and skin lesions. For ocular infections, it can be injected subconjunctivally. Ocular means आंखों की इन्फेक्शन जिसके लिए सबकंजक्टिवल इंजेक्शन दिया जाता है. एक और चीज़ हमने यहाँ पे देखी है इंट्राथीकली फॉर मेनिंजाइटिस. मेनिंजाइटिस ऑल्सो नोन इन कॉमन वर्ड्स, हम उर्दू में इसको हम कहते हैं गर्दन तोड़ बुखार. उसके लिए हम ये दे सकते हैं, लेकिन थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन ज़्यादा प्रेफर की जाती हैं. Tobramycin, as compared to gentamicin, is more active against Pseudomonas. But Enterococcus faecium is resistant to tobramycin. An important thing regarding amikacin is that it is resistant to many enzymes that inactivate gentamicin or tobramycin, which is a good thing. Due to this, many gram-negative enteric bacteria, including Proteus, Pseudomonas, Enterobacter, Serratia, are susceptible to amikacin. Neomycin, as we have discussed before, is only used as a topical agent and acts locally in GI sterilization. Netilmycin is used for the treatment of serious infections caused by organisms resistant to other aminoglycosides. Spectinomycin is an aminocyclitol which is structurally related to aminoglycosides. Spectinomycin is active in vitro against many gram-positive and negative organisms, but it is used almost solely as an alternative treatment for drug-resistant gonorrhea or gonorrhea in penicillin allergic patients. So, you should remember that spectinomycin is used for the treatment of gonorrhea and infections caused by gonococci. Some strains of gonococci may be resistant to spectinomycin, but there is no cross-resistance with other drugs used in gonorrhea.
Pectinomycin is rapidly absorbed after intramuscular injection. A single dose of 40 mg per kg up to maximum of 2 grams is given, but there can be pain at injection site occasionally, or fever and nausea can also happen. Nephrotoxicity and anemia have also been observed, but rarely. Resistance is mainly plasmid mediated and occur due to formation of inactivating enzymes. Your assignment questions are given here. Question number 1, classify macrolides. Question number 2, give adverse effects of aminoglycosides. If you have any question, you can ask me. Thank you so much. Allah Hafiz.